ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਹ ਐਲਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ। ਫਸਲ ਵੱਢਣ 'ਚ ਹੋਰ ਦੇਰ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। तो उधर सरकार तो हरी झंडी मिलते ही किसानों ने भी वाढी की तैयारी खिंच ली है। No, we are going to allow this on this lockdown relief only for farmers for the moment. We have to stop this congestion and people getting together and maintaining their distances. We've increased the number of mandis from 1,800 to 3,800 so that lesser people go into one mandi, and we are now gearing up for that. That's going to be, we are getting a bumper harvest also. This is the fourth bumper harvest, but therefore we have to be prepared for that as well. And God willing, it will go off well. So that is our situation, which is there as far as the situation, what I mentioned to you and in the past and what we are doing today. फसल ਵੱਢ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਕਣਕ ਮੰਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਦਰ ਪਿੰਡ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਏਗੀ ਅਤੇ ਮਿੱਠੀ ਤਰੀਕ ਅਤੇ ਵਕਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਡੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। We are doing it district wise and village wise. We are giving permits to villages to go, so let's say now 3,800 mandis, and we have about two or three small villages attached to that mandi. Then now on first day it will be one village, then the second village, then the third village for the third day. They should be prepared to come there, and that is the way we are trying to restrict the congestion in those areas. So that is it. But let me tell you, it's a very big operation in Punjab. We are expecting 185 lakh tons of wheat, and the marketable surplus we expect is about 135 lakh tons. So it's a very major operation. ਫਸਲ ਦੀ ਬੰਪਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤਾਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵੀ ਪੁਖਤਾ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਘੱਟ ਭੰਡਾਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। Last year lying here, our godowns are still not empty, so we've had to make temporary arrangements in shellers and all so that we can store this wheat. This is a big problem for us. The government has lifted little, but not the way it should have lifted. It should have lifted a lot. We in fact suggested that whichever states you send them to, instead of sending 3 months stocks, send 6 months stocks. At least let us clear them, because where am I going to put all this wheat that's coming? So therefore, we have to now see temporary arrangements, which we are doing. Wherever shellers are existing, we are taking over the land and other open spaces and covering them with tarpaulins and all that. That is the only state we have left. I hope that doesn't, it's, for us, it's a very funny situation. We are buying all this on behalf of the Food Corporation of India, which means Government of India. But any spoilage that takes place is to our credit. So if something goes wrong in the open, in the monsoons, the whole wheat is lost, government is not going to pay for it. It's going to be us who are going to be penalized for this. So that is a problem for us. ਵਾਢੀ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਰੜਕੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਾਅਵਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਜਰਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। देखिए, no state has the resources today to fight such a major battle without the help of Government of India. और Government of India को उनको आना पड़ेगा आगे और हमारी हेल्प करनी पड़ेगी। जैसे 1500 करोड़ 15,000 करोड़ की हम बात कर रहे थे, दैट इज नथिंग फॉर इंडिया। इफ यू सी पर कैपिटा कितनी बनती है, 1.4 बिलियन तो हमारे लोग हैं। कैसे हम हेल्प करेंगे उनको सब? आई मीन देयर विल बी पीपल जो दिहाड़ीदार हैं, वो तो दिहाड़ी नहीं कर सकते इस मौसम में, तो फिर रोटी कहाँ से खाएंगे? सो वी हैव टू हेल्प दोज पीपल जो बेचारे, जिनके पास कोई जमीन नहीं, कोई काम नहीं, जो उनके बच्चे हैं, उनकी सब घर वाले हैं, कैसे वो खाएंगे रोटी? कुछ तो हमें हेल्प करनी पड़ेगी, और स्टेट्स को करनी पड़ेगी, पर हेल्प लेनी पड़ेगी हमें सेंटर से। हम करेंगे। I will mention this to the Prime Minister. I was the one who made a statement to say that please look after your labor. Badi companies, I know I can name you companies that are doing it. They look after your labor, house them, feed them, and give them wages, and that is happening. Most of the big companies here are giving wages and looking after them from the food and
शेल्टर पॉइंट ऑफ व्यू। जहाँ ये हैं वो तो संभालने गए हैं। फिर मैंने कहा था कि ये जो लोग माइग्रेंट लेबर आई है उनका भी संभाल करो, क्योंकि पंजाब की ज़रूरत है। कभी इंडस्ट्री तो चलेगी, उससे पहले तो फसल आ रही है, हमने इतनी फसल की कटाई करनी है। सो लुक आफ्टर देम एंड आई एम हैप्पी टू से पीपल आर लुकिंग आफ्टर देम, विलेजेस आर लुकिंग आफ्टर देम। अकेले लुधियाने में 10 लाख बैठे हैं हमारे ये माइग्रेंट लेबर। सो वी आर लुकिंग आफ्टर देम एंड बस परसों से उनका काम, चौथे से काम शुरू हो जाएगा। ਪੱਕੀ ਫਸਲ ਖੇਤ 'ਚ ਖੜੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਲੀਕਿਆ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏਗਾ।